सलाम नमस्ते टू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। ZsLearning में आप सभी को स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट 1, आवर पास्ट 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ। Children learn more by observing people, places and events around them. Ravi, a student of class 6, returned home from a long vacation and told his friends all about the historical buildings and monuments he saw at Madhya Pradesh. The discussion on historical events, monuments among Ravi and his friends got very lively. They came to the conclusion that by studying history, one can learn about things that happened in the past, why they happened, and also something about the people involved. तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग की हिस्ट्री कितना ज़रूरी है। रवि जो एक स्टूडेंट थे क्लास 6 के, वो वेकेशन में चले गए थे घूमने के लिए मध्य प्रदेश, और जाने के बाद उन्हें बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स जो पहले थे जो अभी ख़राब हो गए हैं, वो सब की चर्चा करने के लिए, सबके एक्सपीरियंस लेने के लिए वो मध्य प्रदेश गए थे। अभी हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ हिस्टोरी। History traces all aspects of the course of human civilization since the earliest time. Over the years, the world has been divided into many countries which differ from each other in ways in which they live. Studying past events tells us a lot about our ancestors, how they lived, what they ate, what kind of clothes they wore, the kind of shelters or houses they lived in, their beliefs, their leisure activities, their festivals, the sort of difficulties they faced, how they overcome them, etc. We also learn about various aspects of the lives of kings, priests, merchants, hunters, gatherers, art and artisans, musicians and scientists. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इंसान के फूड स्टेप है, मतलब जो पहले के ज़माने में पहले के लोग किस तरह खाते थे, किस तरह चलते थे, उन लोग का विचार किस तरह था, उन लोग की सोच, उन लोग की बिलीफ किस तरह थे, वो लोग किस तरह रहते थे, कितने सारे तकलीफ़ उन लोग उठाए थे, सब के बारे में हमें हिस्ट्री मिलते हैं। वो लोग के किस तरह गाते थे, किस तरह वो लोग आर्ट किए हुए थे, किस तरह वो लोग खाना पकाते थे, किस तरह वो लोग शिकार करते थे, इस सभी चीज़ हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। Why study history? The past leads to the present. In other words, present situations have evolved out of past actions and events. This is why studying the past helps us to understand the present problems and situations better. It also makes it easier for us to shape a better future for ourselves. There are two ways in which we can understand the history of any country. Number 1, careful observation of reliable source materials. Number 2, rational approach to accepting or rejecting historical interpretations. How does one get hold of reliable source material? This is done by excavating, digging up all historical sites. We dig up various objects such as posters, unbaked and baked bricks, jewelry, etc. हम लोग को हिस्ट्री हम लोग को किस लिए जानना ज़रूरी है? क्योंकि हिस्ट्री पास्ट से जुड़ा हुआ है। पास्ट से लेकर अतीत से लेकर आज तक जो है कनेक्टेड, ये सब हम लोग को हिस्ट्री में मिलते हैं कि वो लोग किस तरह धीरे लोग किस तरह इस जनरेशन में किस तरह प्रोग्रेस हुआ है, कौन सी चीज़ को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, किसको हमें रिजेक्ट करनी चाहिए, वो सब हम लोग को हिस्ट्री में मिलते हैं। नेक्स्ट, रियलाइज all reminders like this give us valuable information about. Turn the page number 2. The people who use these products, how these objects were made, the circumstances people lived in, what the various sections of society did for a living, their outlook on life, type of government, etc. History is not simply a record of kings and queens, but it also throws
light on the lives of different groups of people. For example, the lives of kings and queens were different from the lives of merchants, farmers, and herders. Even today, people of different groups of communities follow different practices and customs in different parts of country. हिस्ट्री मतलब सिर्फ राजा रानी की बात नहीं है. हिस्ट्री में हम लोग को हर, चाहे वो खेती करता हो, चाहे वो बहुत हार्ड लेबर करता हो, उन लोग के ज़िंदगी के जुड़ा हुआ हर चीज़ हमें हिस्ट्री में मिलते हैं. और पहले उन लोग का जो शासन था किस तरह था, ये सब हमें हिस्ट्री में मिलते हैं. वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? Historians have divided history into two sections, prehistory and history. Prehistory. There are no written records of this period. Men had lived on earth for thousands of years before they learned the art of writing, so there are no written records to rely on. Thus, the study of the early stages of human history is entirely based on the material remains left by early men. हमें हिस्ट्री दो टाइप के हम डिवाइड करते हैं. एक है प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? जो पहले रिकॉर्ड्स करने के लिए कोई भी हाथ में लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और इंसान एक जो जिस इंसान को स्टडी किया, जिस नॉलेज हासिल किया, वो दूसरों को पहुंचाए, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं था. और दूसरा है द नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री. देयर आर राइटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड. According to Oxford Dictionary, history is written or spoken account of past event. हम लोग को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो हिस्ट्री के डेफिनेशन मिलते हैं वो क्या है? जिसके बारे में लिखा और कहा है कि वो लोग पहले किस तरह वो लोग जीते थे. पहले की हर चीज़ हमें जो देते हैं लिखा हुआ रिकॉर्ड में, वो हिस्ट्री कहा जाते हैं, उसे हिस्ट्री कहते हैं. Till the 19th century, little was known about the prehistoric period. Around the 19th century, scholars began to dig at places where prehistoric men had once lived. पहले जो प्रीहिस्टोरिक, जो पहले लिखा नहीं होता था, सिर्फ सुनते और बात करते हुए जो नॉलेज को स्प्रेड होता था, उन लोग कुछ टिल द 19th सेंचुरी से हम लोग क्या किए हैं, उनको जो प्री हिस्ट्री में जो था उसको खोदना शुरू कर दिया कि वो लोग की ज़िंदगी किस तरह था. हमें अभी उनके रिकॉर्ड लिखना होगा, वो लोग की ज़िंदगी हमें एंट्री करना होगा, तो ये हिस्ट्री में आते हैं. This brought to light tools, potters, crude jewelry, bones of ancient men and animals, etc. और हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, जैसे एनिमल्स के हड्डी मिले हैं जो इंसान लोग पहनते थे, अपने ज्वेलरी. तो ये सब हमें हिस्ट्री में सब हम लोग को रिकॉर्ड्स निकल गया है और वो रिकॉर्ड किया है. After analyzing those material remains, historians came to the conclusion that the story of man began about 4 million years ago in Africa. तो लास्ट में ये पता चला कि अफ्रीका में 4 मिलियन ईयर्स पहले से ही इंसान लोग जितने सारे उन लोग के, चाहे वो ज्वेलरी की चीज़ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, मैन हो, जिस तरह वो लोग जीते थे, वो 4 मिलियन ईयर्स पहले से ही वो लोग उस तरह जी रहे हैं. और उन लोग की सारी हिस्ट्री हमें अभी हाथ में लग गए हैं और अभी भी उनका काम शुरू है. द फ्रेम इन हिस्ट्री. History deals with the history of man's past. Therefore, it is important that each event is linked to a fixed point of time on a suitable scale. Thus, would work like centimeter mark on a ruler. That is why historians introduce the concept of BC and AD. The years before the birth of Christ are expressed in BC or BCE or before Christ era. All dates before the birth of Christ are counted backwards. On the other hand, AD stands for Anno Domini, or the year of the Lord. It stands for the years after birth of Christ. Therefore, the year 2008 can be written as AD 2008. Lord Buddha is said to have been born sometime between 563 and 483 BC.
This means that Buddha was born about 500 years before Christ. Some historians use the words CE instead of AD and BC instead of BC. The letter CE stands for Common Era and BC for Before Common Era. तो हमें अभी हिस्ट्री के जो टाइम फ्रेम है वो हमें पता चला कि जो BC और AD किसे कहते हैं. हम लोग जो BC कहते हैं वो है बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट जन्म से पहले जो एरा थे, जो वक्त थे, उससे BC कहते हैं. और AD किसे कहते हैं? एनो डोमिनी, यानी कि द ईयर ऑफ द लॉर्ड. मतलब जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से AD शुरू हुआ. जैसे अभी हम लोग 2023 अगर लिखेंगे तो AD 2023. और लॉर्ड बुद्धा जो जिनका जन्म कहते हैं 563 या फिर 483 BC में हुआ था, तो इनका मतलब ये पता चला कि बुद्धा क्राइस्ट से, जीसस क्राइस्ट से 563 या 483 500 साल पहले उनका जन्म हुआ था. यानी कि बुद्धा पहले आए थे, इसलिए BC हुआ और अभी के वक्त AD कहा जाते हैं. तो we'll discuss the next part in the next video. Thank you so much. Have a very happy day. Take care. Jai Hind.